welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 10, and the name of the chapter is measurements, right? So let's see कि इन measurements को हम अपनी daily life में कैसे use करते हैं, right? Now they are saying that take the approximate weight, capacity or length, that means height of each, right? तो हमें इन सभी ऑब्जेक्ट्स की हाइट, वेट या फिर लेंथ को मेजर करना है, राइट? एक आइडिया के अकॉर्डिंग, और हमें उन चीजों पर टिक करना है, करेक्ट? सो वी हैव अ शार्पनर which is giving us two options, 15 mm and 250 kilometers. So obviously this is going to be 15 mm, right? Next is 100 mg, milligrams, or 200 grams. So obviously it is going to be 200 grams, right? Next is a girl, right? And there are two options, 25 meter or 1 meter, right? So she would be 1 meter, correct? Next is pack, which is of 10 ml or 2 liters. So obviously it would be 2 liters, correct? Next is a scooter, and the options are 100 kgs or 1000 kgs. So obviously the answer is going to be 100 kgs, right? Next is an injection holding medicine of about approximately 5 ml or 5 liters. Obviously, it is going to be 5 ml. Let's get started with the very first topic of the chapter, which is length. So, देखते हैं अब ये length क्या है, right? So, length is the measurement of how long or tall an object is. तो लेंथ एक एक्चुअली मेजरमेंट की यूनिट है कि जो हमें बताती है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लंबा या फिर कितना बड़ा है, राइट? वी यूज डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर लेंथ डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्ट इज, कि हम अलग अलग यूनिट्स को यूज करते हैं ताकि हम मेजर कर सके लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो कितना लंबा है. We measure very small objects like the thickness of a notebook or a coin in millimeter. कि हम बहुत सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक नोटबुक की थिकनेस या फिर एक कॉइन की थिकनेस को मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं, राइट? द लेंथ ऑफ अ नोटबुक और अ पेंसिल and so on are measured in centimeters. कि अगर हमें किसी नोटबुक, पेंसिल या फिर किसी और चीज की लेंथ को मेजर करना है तो हम उन चीजों के लिए सेंटीमीटर्स का यूज करते हैं. Then short distances and length such as height of a building or tree and so on are measured in meters. कि जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस होते हैं, राइट, लेंथ्स होती है जैसे कि हाइट ऑफ अ बिल्डिंग यानी कि एक बिल्डिंग या फिर एक ट्री की हाइट, राइट? तो इन सभी चीजों को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, करेक्ट? देन इज किलोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि किलोमीटर्स का यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए. The distance of two cities is measured in kilometers. कि दो cities के बीच का जो distance है अगर हमें वो measure करना है तब हम किलोमीटर्स का यूज करते हैं. Clear? Now, this is how different units of length are related. तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बाकी सारी यूनिट्स हैं लेंथ की वो आपस में इंटरकनेक्टेड है. कैसे? That means 1 centimeter is equal to 10 mm. 1 meter
is equal to 100 centimeter. 1 meter is equal to 1000 mm. And 1 kilometer is equal to 1000 meters. Right? Now, moving ahead, we have the next topic, that is weight. So, अब हम weight कैसे measure करते हैं? Let's see. So, it says, in metric system, the basic unit of mass is the gram. कि metric system में जो basic unit है mass का, वो gram है, right? किलोग्राम है या फिर मिलीग्राम है. Are two other units to use to measure mass. और यही सब units हैं जिन्हें हम use करते हैं mass को measure करने के लिए. mass यानी कि weight, right? The mass of objects such as a sack of vegetables or a packed suitcase is measured in kilograms. कि जो heavy objects होते हैं जैसे कि एक सब्जियों का जो सैक होता है, राइट, पैक्ड सूटकेस, एक सूटकेस है जो कि पैक्ड है, उन चीजों को हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में. द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चॉकलेट्स बॉक्स, वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, इन सभी चीजों को हम मेजर करते हैं ग्राम्स में, राइट. The mass of object such as a gold ring or a medicine capsule is measured in milligrams. कि एक ऑब्जेक्ट का मास यानी कि उसका वेट, जैसे कि एक गोल्ड रिंग या फिर मेडिसिन कैप्सूल, ये सभी मिलीग्राम्स में मेजर किए जाते हैं, राइट. We use kg for kilogram, g for gram and mg for milligram. तो ये हमने इन सभी यूनिट्स के कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं जिसमें हम किलोग्राम को यूज करते हैं kg के थ्रू, ग्राम को g के थ्रू और मिलीग्राम को mg के थ्रू, राइट. This is how different units of weight are related. इसी तरीके से जो अलग अलग यूनिट्स है वेट की वो आपस में रिलेटेड है, राइट. 1 kg is equal to 1000 grams and 1 grams is equal to 1000 mg, right? Then next we have capacity. So अब ये capacity क्या है, right? So it says volume of a container is the measure of how much it can hold. कि एक कंटेनर की वॉल्यूम यानी कि एक कंटेनर में कितना लीटर ऑफ लिक्विड हम कंटेन कर सकते हैं उसको कहा जाता है उस कंटेनर की वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी, राइट. इट इज ऑल्सो नोन एज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कि इसे हम कंटेनर की कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं, राइट. इन द मेट्रिक सिस्टम वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर्स और मिलीलीटर्स. कि मेट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो होती है किसी भी कंटेनर की वो हम लीटर्स या फिर मिलीलीटर्स को यूज करके मेजर करते हैं, राइट. द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज द लीटर. कि वॉल्यूम की जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम कहते हैं लीटर. सिमिलर टू द कन्वर्जन फॉर द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड मास, राइट. जो कि सिमिलर होती है कन्वर्जन के लिए जो कि यूनिट्स ऑफ लेंथ और मास, राइट. सो इट सेज 1 liter इज इक्वल टू 1000 milliliters, राइट. नाउ वी हैव an exercise. So the question says fill in the blanks with the correct measuring units. तो अब हम मेजर करेंगे इन सभी चीजों के हाइट को एंड वी हैव टू टेल द यूनिट्स कि हम कौन सी यूनिट में किस चीज को मेजर करते हैं, राइट. सो इट सेज द एवरेज हाइट ऑफ अ पोल इज 80.
तो पोल की हाइट को हम किस यूनिट में नापेंगे? इट शुड बी 80 meters, right? Then the distance between Delhi and Haridwar is 119. So हमने पढ़ा था कि हम distances को दो cities के बीच में जो distance होता है उसको measure करते हैं kilometers का use करके. So it is kilometers, right? Next, mother used 2 dash of olive oil as dressing for the salad. अब हम यहाँ पर ऑलिव ऑयल यानी कि लिक्विड को मेजर कर रहे हैं. सो लिक्विड इज ऑलवेज मेजर्ड इन लीटर्स, राइट? नाउ माय ब्रदर इज 6 dash tall. सो अब हाइट हम किस में मेजर करेंगे? ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर्स. Okay, sorry. My brother is 6 dash tall. So हम height यहाँ पर measure कर रहे हैं. So obviously it would be measured in feet. So my brother is 6 feet tall. Right? Next, the weight of a full bag of almonds is 2 dash. So obviously full bag of almonds is going to be measured in kgs. So 2 kilograms, right? Correct. Now let's move ahead to the next topic. Okay, so the next topic is conversion of units of length, weight and capacity. तो अब हम यहाँ पर कैसे units में converge करते हैं, conversion करते हैं length, weight और capacity तीनों में ही हम सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे length के बारे में. So let's see कि ये length हम कैसे convert करते हैं. For converting lower units to higher units we divide. कि अगर हमें lower units को higher units में convert करना है तो हम divide करते हैं. But for converting higher units to lower units we multiply. अगर हमें higher units को lower units में convert करना है तो हम multiply करेंगे. राइट? जैसे कि हमें यहाँ दिया गया है, if we have to convert centimeter into meter or meter into kilometers, so we divide here, right? But if we need to convert kilometers into meter and meters into centimeters, so we multiply, right? So जैसे कि example से हमें समझाया गया है, they say convert 3 kilometers into meter. तो हमें 3 kilometers को मीटर में convert करना है. So it says we know 1 kilometer is equal to 1000 meter. कि हमें पता है 1 kilometer होते हैं 1000 meters के बराबर. So therefore 3 kilometers is equal to 3 into 1000 meters and the answer becomes 3000 meters. In example 2, they say convert 24 centimeter into millimeter. अब हमें 24 centimeter को millimeter में convert करना है. So we all know that 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Correct? Then 24 centimeter is equal to 24 into 10 millimeters is equal to 240 millimeters. Example 3, which says convert 5000 meters into kilometers. तो अब हमें एक smaller unit को bigger unit में convert करना है, right? So how we are going to do this? As we all know that 1 kilometers is equal to 1000 meters, right? Now we need to convert these meters into kilometers. So what we are going to do is we are going to divide 5000 by 1000 kilometers, right? So the answer becomes 5 kilometers itself, right? Now, next topic that we have is weight. So, अब बात करते हैं weight की कि कैसे हम weight को convert कर सकते हैं. So they say let us look at some examples.
जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और सीखते हैं. So example 4, it says convert 5145 milligrams into grams. तो अब कैसे हम मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे? So it is, we know 1 gram is equal to 1000 milligrams. Therefore, 5145 milligrams is equal to 5000 milligrams plus 145 milligrams, right? So, hence we divided 5000 with 1000 plus 145 milligrams. So, is equal to 5 grams 145 milligrams is the answer. We have the example which says 4296 grams into kilograms. Same process we are going to follow. We know that 1 kilograms is equal to 1000 grams. So, says 4000 grams plus 296 grams. So, 4000 divided by 1000 grams plus 296 grams gives the answer, that is 4 kilograms 296 grams. Next topic, we are talking about the capacity, right? अब ये capacity क्या है? Let's find out. So it says, let us make Ashish and Rohan understand how to convert liters to milliliters and vice versa, right? तो अब जल्दी से आशीष और रोहन को बताते हैं कि हम कैसे लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ उसका उल्टा, यानी कि मिलीलीटर्स को हम लीटर्स में भी कैसे कन्वर्ट वापस से कर सकते हैं, right? So let's take the help of examples which says convert 4 liters into milliliters. As we all are aware, 1 liter is equal to 1000 milliliters. Then therefore 4 liters is equal to 4 into 1000 milliliters, right? Is equal to 4000 milliliters. Correct? Then convert 2459 milliliters into liters. अब this is opposite, right? कि हमें milliliters को liters में करना है. Obviously we are going to divide. So as we all are aware that 1 liter is equal to 1000 milliliters. Therefore, 2459 millimeters is equal to 2000 milliliters plus 459 milliliters is equal to 2000 divided by 1000 liters plus 459 milliliters. That gives the answer 2 liter 459 milliliters. Correct? Now next we have the exercise. It says choose the correct option. तो अब जल्दी से correct option को choose करते हैं. So it says which operation is used to convert higher units to lower units. तो अब ये कह रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन है जिसको यूज करके हम हायर यूनिट्स को लोअर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड द ऑप्शंस आर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, division or subtraction. As we all know that multiplication is the operation जिसके थ्रू हम higher units को lower units में convert कर सकते हैं, right? Next, it is 1/4 kilograms is equal to dash grams. So 1/4 kilograms. As we all know कि 1 kg में 1000 grams होते हैं, right? Now they're asking for 1/4. So that means हम 1000 grams को 4 से divide करेंगे. So 4 2 2s are 4 and 2 500s are 1000. 2 1s are 2 and 2 250s are 500. So that means 250 grams. So hence we get the answer 250 grams. Correct? Next, 2 kg of apples can be weighed by using 2 500 grams and dash 450 grams. तो जब हम 2 kg एप्पल्स को वे कर सकते हैं 2
टू 500 ग्राम्स को इक्वल रख के, तो 2 500 ग्राम्स यानी कि हो गया हमारे पास 1000 ग्राम्स, राइट, जो कि हो गया 1 kg के बराबर, करेक्ट। एंड डैश 250 ग्राम्स, तो अब हमारे पास बचे 250 ग्राम्स के हम कितने कॉइन्स यूज करेंगे ताकि हम 1 kg और ऐड कर सकें। सो इट इज 4 times 250 plus 250 plus 250 plus 250, right? So that means 4 is the correct answer. Correct? Next, they say during a flood, the state government decided to distribute 42 kilograms rice among 60 villagers equally. How much rice will each villager get? Now they are saying कि एक village में flood situation हुई, right? So वहां पर 4200 kgs राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 60 विलेजर्स में इक्वली बांट देंगे। तो हाउ वी आर गोना डू दिस, हाउ वी आर गोना डिवाइड इट? Simply we are going to divide 4200 kgs by 60. So it gives us 70 as the answer. So we get to know that 70 kg is the amount that is going to be held by each of the villagers. Correct? Now next, let's move to the question 2, which is convert the following as directed. So कैसे हम इन्हें convert करेंगे? Let's try to find out. So first of all, they say 15,000 kilograms to grams. So they are asking to convert 15,000 kilograms into grams, right? So we all know that 1 kg is equal to 1000 grams, right? So 15,000 kilograms is equal to 15,000 into 1000 grams, right? So it will give the answer. Right? So it is. Let's pick one more, which says 2,896 milliliters to liters and milliliters also, right? So how we're going to do this? We all know, first of all, let's write it. So it is 2,896 milliliters to liters and milliliters, right? So how it's going to be done is that first of all, we're going to arrange it in the, we all know the process, which is 1 ml is equal to 1 liters is equal to 1000 milliliters, right? Then 2,896 milliliters is equal to 2000 plus 896 milliliters. Then it is going to be that we divide 2000 by 1000 plus 896 milliliters. So the answer becomes 2 liters 896 milliliters, right? So this is how we are going to convert all these units into the described ones, right? Coming up to the next question. The question is arrange the following in ascending orders. So अब हमें इन सभी units को ascending orders डालनी, यानी कि ascending order means smaller to greater, right? इस series में हमें इन्हें arrange करना है. So here you can see we have 5 liters and 9 milliliters. Then it is 5,850 milliliters. Then it is 5 liters 900 milliliters. Then it is 5,090 milliliters, right? So the simplest way to compare these units is to convert all of them in a single unit. Suppose it is milliliters and liters का mixture यहाँ पर है, right?
कुछ यूनिट्स हमें ऑलरेडी mls में दी गई हैं, तो क्यों ना हम इन लीटर्स वाली यूनिट्स को भी मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लें और तब इन्हें कंपेयर करें, राइट? सो लेट्स सी 5 लीटर्स एंड 9 मिलीलीटर्स हो जाएगा 5009 मिलीलीटर्स, राइट? देन इट इज 5850 मिलीलीटर्स, करेक्ट? Then 5 liter 900 milliliters. So it could be 5900 milliliters. And next is 5090 milliliters. Correct? Now all of them are in milliliters. So we can easily compare them, right? So we can see that this is the first one. So this is going to be the first digit, right? Then it is 5090. So this is going to be the second one. Then third is the 5850. Then it is third one. And the last one is 5900. So it is the fourth one. Clear? So this is how we all are going to compare we are going to arrange all of these units into their ascending order. Next topic that we have is addition and subtraction of lengths, weights and capacities. तो हम जल्दी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं लेंथ, वेट और कैपेसिटीज का. So now let's see how we can add or subtract these lengths, weights and capacities, right? So it says to add or subtract length, weight or capacity, write the units given and below them their values, right? तो अब हमें add या subtract करने के लिए length, weight या फिर capacity को units लिखनी होती हैं जो भी दी होती हैं, right? Then add or subtract as you do for any other numeral. और हमें फिर सिंपली जैसे हम बाकी न्यूमरल्स को ऐड करते हैं उसी तरीके से इन्हें ऐड कर देना है, करेक्ट? सो सबसे पहले वी हैव लेंथ. तो लेट्स सी लेंथ को हम कैसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट? सो द एग्जांपल्स आर add 9 kilometers, 156 meters and 13 kilometers, 13 meter. तो हमें यहाँ पर दो यूनिट्स दी गई हैं, दैट इज किलोमीटर्स एंड मीटर्स, करेक्ट? तो हम दो कॉलम्स बनाएंगे, वन फॉर किलोमीटर एंड वन फॉर मीटर, राइट? देन मीटर वाले यूनिट्स को मीटर के नीचे लिख देंगे एंड देन किलोमीटर्स वाले यूनिट्स को किलोमीटर्स के नीचे लिख देंगे, right? And then we are simply gonna add this. This like 6 plus 0 is 6, 5 plus 3 is 8, 1 plus 0 is 1, 9 plus 3 is 12, 1 carry, then 1 plus 1 carry is 2. So hence the answer becomes 22 kilometers, 186 meters, correct? Now, we have a point to remember. Let's see what it says. So just write 30 as 030 and don't forget to regroup meter into kilometer. Right? कि हमें 30 को 030 की तरह लिख देना चाहिए, right? पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें मीटर को रीग्रुप करना है किलोमीटर से, correct? Now, it says example 9, which is subtract 36 meters 64 centimeter from 79 meter 21 centimeter, correct? तो हम क्या करने वाले हैं, 79 meter 21 centimeter पहले अरेंज करेंगे in the columns of the two, that is meter and centimeters. Then we're gonna subtract these numerals as usual. So it is 1 minus 4 is not possible. So we write 11 minus 4 is 7. Then again after cutting 2 we write 1 over here. Then 1 minus 6 is also not possible. Again we borrow 1 from the side and write 11 minus 6, 5.
Then cutting 9, we write 8. 8 minus 6 is 2. 7 minus 3 is 4. Thus, 79 meter 21 centimeter minus 36 meter 64 centimeter is equal to 42 meters 57 centimeter. Correct? Next, we have weight. अब let's see कि हम weight को कैसे add या फिर subtract कर सकते हैं. Let's try to understand with the help of the examples. That is, add 34 kilograms, 25 grams and 8 kgs and 213 grams. Right? Simply 2 columns to be arranged, then the numerals to be arranged in the columns, and then we are gonna add them. So this 5 plus 3 is 8, 2 plus 1 is 3, 0 plus 2 is 2, 4 plus 8 is 12, then 1 carry, and 3 plus 1 carry is 4. So hence, the answer becomes 42 kilograms and 238 grams. Right? Next, we have a box to keep in mind. Let's see what it says. So just write grams in 3 digits. हमें हमेशा grams को 3 digits में लिखना है. Right? So just we can write 25 grams को as 0.25 grams. It is subtract 80 grams, 36 milligrams from 97 grams, 125 milligrams. So again, we are going to do the same thing. So 2 columns बनाएंगे and then we are going to arrange these numbers. It is 97 gram, 125 milligrams from subtracted 80 grams and 36 milligrams, right? So, it is 15 minus 6 is 9. Then 11 minus 2 is 11 minus 3 is 8. Then 0 minus 0 is 0. 7 minus 0 is 7. 9 minus 8 is 1. So, hence the answer becomes 17 grams, 89 milligrams. Talk about capacity. So, अब देखते हैं कि हम capacity को कैसे add या फिर subtract करते हैं. So, it says add 27 liters, 150 milliliters and 32 liters, 328 milliliters. Correct? So, we have the 2 units over here, right? Arranging them in their columns and then adding them. 0 plus 8 is 8. 5 plus 2 is 7. 1 plus 3 is 4. 7 plus 2 is 9. 2 plus 3 is 5. Right? So the answer becomes 59 liters, 478 milliliters. Clear? Then, next is subtract 26 liters, 625 milliliters from 54 liters, 560 milliliters. Correct? So, we have 2 columns over here. Correct? So, let's arrange the digits in the columns first of all and then subtract it. So, it is 10 minus 5 is 5. Then 5 minus 2 is 3. 15 minus 6 is 9. 13 minus 6 is 7. 4 minus 2 is 2. Right? So, the answer becomes 27 liters, 935 milliliters. Now, moving ahead, we have the exercise which says solve the following. अब जल्दी से इन सभी digits, इन सभी questions को solve करते हैं. Right? So, let's pick this one. First one, we have to add this. So, this 6 plus 8 is 14. 1 carry, then 4 plus 5 is 9, then 1 carry is 10. So, the answer becomes 1 meter and 4 centimeters. Clear? Then,
Let's move to the one which is of subtraction. So it says 15 minus 9. 15 minus 9 is 6. Then writing 4 over here, 4 minus 3 is 1. Then 4 minus 2 is 2. So the answer becomes 21 centimeters and 6 millimeters. Right? Next, question number 2. Solve the following. जल्दी से इन्हें solve करते हैं. So it says, let's pick this one first of all, where we have two units, which is kilograms and grams. Arranging the numbers into their columns first of all. So it is 15 kgs, 306 grams plus 15 kgs, 740 grams. Adding them, 6 plus 0 is 6, 0 plus 4 is 4, 3 plus 7 is 10, 1 carry. Then 5 plus 5 is 10, plus 1 carry is 11, 1 over here and 1 carry again. 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 carry is 3. So hence, the answer becomes 31 kgs and 46 grams. Clear? Next, let's take one subtraction part also. It again has two units, which is meters and centimeters. Let's arrange the numbers. So it is 27 meters, 18 centimeters, subtracting 9 and 27. Right? So it is 8 minus 7 is 1. Then we can't subtract 2 from 1, so we'll borrow 1 and write 6 over here instead of 7. 11 minus 2 is 9. Then 6 minus 9, again not possible. We borrow 1 from here and write 1 over instead of 2. 16 minus 9 is 7 and 1 is 1. So the answer becomes 17 meters and 91 centimeters. Clear? Moving ahead. Now, we have the topic which is real life situations involving measurement. तो अब कुछ ऐसी real life situations जिसमें हमें measurements को include करना पड़ता है. Right? So, the example is Naveen and his family traveled 45 kilometer, 255 meter on the first day. So नवीन और उसकी फैमिली ने ट्रैवल किया इतना distance on the first day. Then 25 kilometers, 650 meter on the second day. इतना kilometers on the second day. And इतना distance on the third day of the trip. Right? तो 3 दिन का distance यहाँ पर हमें दिया गया है. Find the total distance by them. तो अब हमें टोटल डिस्टेंस का पता लगाना है जो कि उन्होंने ट्रैवल किया. सो हाउ वी कैन डू दिस इज, यहाँ पर दिया गया है. सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट डिस्टेंस कवर्ड ऑन फर्स्ट डे, राइट, डिस्टेंस कवर्ड ऑन सेकेंड डे and distance covered on third day. Then we are going to add these 3 distances and hence at the end we get the answer. So thus the total distance traveled by the family is 106 kilometers and 355 meters. Right? Next, the capacity of a water tank is 750 liters. कि एक वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी 750 लीटर्स की है. इफ 453 लीटर 693 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज यूज्ड इन अ डे, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक. कि अगर एक दिन में हम इतना लीटर्स ऑफ वाटर यूज करते हैं तो हमें एक अमाउंट बताना है जो पानी उस टैंक में बच जाता है. राइट? सो सिंपली वी आर गोना सबट्रैक्ट द यूज्ड क्वांटिटी फ्रॉम द टोटल वन. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू, टू फाइंड द वाटर लेफ्ट इन द टैंक वी सबट्रैक्ट. राइट? हमें माइनस करना है कैपेसिटी ऑफ द टैंक, दिस,
अमाउंट ऑफ द वाटर यूज्ड को हम कैपेसिटी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, then we'll get the water left in the tank, right? So the amount of water that is still left in the tank is 296 liters, 307 milliliters. Correct? Now, we have to keep in mind some things. They are, in real life problems, the words like total in or indicate addition. कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जो वर्ड होता है टोटल, वो एक्चुअली एडिशन को इंडिकेट करता है. तो जहां भी हमें रियल लाइफ सिचुएशंस में टोटल वर्ड यूज मिल जाए तो हमें वहां पर एडिशन करना है. ऑन दी अदर हैंड, वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक लेफ्ट, ऐसे वर्ड्स या फिर कुछ फ्रेजेस जो हमें लेफ्ट वाली सिचुएशन के बारे में बताते हो या फिर हाउ मच मोर, ये वाले फ्रेजेस हो, तो ये हमें इंडिकेट करते हैं सब्ट्रैक्शन, राइट? कि हमें उन सिचुएशंस में सब्ट्रैक्ट करना है. सम अदर एग्जांपल एज वेल व्हिच सेज निपुन बॉट 45 kilograms 600 grams wheat from one shop and 54 kilograms 750 grams rice from another shop. Find the total weight he would be carrying to his home. तो अब हमें टोटल वेट निकालना है जो कि वो अपने घर कैरी कर रहा है, राइट? सो इट सेज वी हैव टू ऐड बोथ द मेजर टू फाइंड द टोटल वेट, राइट? तो अब हमें दोनों को ऐड करना होगा ताकि हम टोटल वेट उसका निकाल पाए. सो वेट ऑफ वीट, वीट का वेट है इतना, वेट ऑफ राइस, राइस का वेट है इतना, then total weight we'll get when we'll add these two digits. So it is, thus Nipun has to carry 100 kgs and 350 grams weight. Clear? Now, moving ahead, we have the exercise. Let's see. Okay. So let's take the last one. So let's take the last one, which is Rita has ribbon of 14 meters and 145 centimeter long. कि उसके पास एक रिबन है जिसकी लेंथ इतनी है. She cut off 6 meter and 60 centimeter to tie a gift. पर उसने उस टोटल लेंथ में से इतना रिबन कट कर लिया क्योंकि उसे गिफ्ट को टाई करना था. How much ribbon is left? तो अब उसके पास कितना मीटर्स रिबन बचा हुआ है, that we need to identify. So it is, let's subtract it. So we'll write meter over here and centimeters over here, right? Then we'll put the values. So we need to subtract 6 meters and 60 centimeters from 14 meters, 60 centimeters, right? So let's subtract it. So it is 5 minus 0 is 5. Then 4 minus 6 is not possible. So it is 14 and we'll write 0 over here. So 14 minus 6 is 4 plus 4 is 8. Then 0 minus 0 is 0. Then 4 minus 6 again not possible. We'll take 1 carry and 0 over here. So it is 14 minus 6 again. 14 minus 6 is 8. So hence the answer becomes 8 meter and 85 centimeter of the length of ribbon to be left with Ria, right? So now let's have a chapter at glance. Let's see what all points we studied in the chapter. So it is, length is the measure of distance between 2 points. कि जो length है वो actually measurement यानी कि नाप है दो points के बीच का, right? कि उनके बीच कितना distance है. The basic unit of length is meter. कि लेंथ की जो बेसिक यूनिट है यानी कि हम लेंथ को यूजुअली जिस यूनिट में नापते हैं वो है मीटर. देन अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ आर मिलीमीटर. कि जो बाकी कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं लेंथ की वो है मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर, राइट? देन
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर होते हैं 1000 मीटर्स के बराबर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर, then 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Clear? Moving ahead, it is the amount of matter is an object is called mass of the object. The amount of matter यानी कि एक ऑब्जेक्ट में जितना मैटर होता है उसको ऑब्जेक्ट का मास यानी कि उसका वेट कहा जाता है. द बेसिक यूनिट ऑफ मास इज ग्राम. कि मास को हम यूजुअली जिस यूनिट में मेजर करते हैं दैट इज ग्राम्स. देन टू अदर यूनिट्स used to measure are kilograms and milligrams. की वेट को हम इन दो यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं दैट इज किलोग्राम एंड milligrams, right? Then 1 kilogram is equal to 1000 grams and 1 gram is equal to 1000 milligrams, right? Next, the capacity of the container is the measure of how much liquid it can hold. कि एक कंटेनर की कैपेसिटी वो कहलाती है जब हम नाप सकें कि उसमें हम कितना लिक्विड डाल सकते हैं, वो यानी कि वो कंटेनर कितना लिक्विड कंटेन कर सकता है. द बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर. कि जो बेसिक यूनिट होती है कैपेसिटी मेजर करने की उसे लीटर कहा जाता है, राइट? देन milliliter is used to measure the capacity of small containers. कि मिलीलीटर जो है वो यूज की जाती है जब हमें छोटे कंटेनर्स की कैपेसिटी को मेजर करना हो, राइट? 1 liter is equal to 1000 milliliters. Clear? Then to convert the smaller units to larger units we divide. कि जब हमें कन्वर्ट करना हो स्मॉलर यूनिट्स को लार्जर यूनिट्स में तो हम डिवाइड करते हैं. देन टू कन्वर्ट द लार्जर यूनिट्स टू स्मॉलर यूनिट्स वी मल्टीप्लाई. बट जब हमें लार्जर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you all are clear with the concepts. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.